So here I am, your host and mentor, CA Anu Agarwal. So we were doing chapter number 7. We've already finished the first half of the chapter. Today we will be doing the methods, how to measure national income, the difficulties that we face while measuring that national income. And both these parts are very, very important from exam point of view. मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले 5 chapters और एक और chapter, that is chapter number 7. अगर इतना कर लोगे तो guys 100% पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे. So on this note, let's get started. So there are 3 methods of measuring national income. One is the output method or the product method. The second method is the income method, and the third is the expenditure method. आपको long question में, that is question number 6 में आ सकता है ये. That is explain the methods of measuring national income. Or they can just ask you one of the methods and ask you to define the problems faced in that particular method while measuring the national income. And of course, इसमें से question number 2 में भी आ जाता है, 2-liners, जहाँ पर आपको reasoning और assertion type के question में ही आ जाता है. जो पिछला लेक्चर मैंने लिया था वहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है. सो इन अ नटशेल दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स जनरली अंडरस्टैंड ये चीज क्या है, मतलब ये 3 मेथड्स क्या है. इफ यू रिटरेट माई एग्जाम्पल विच आई गेव यू इन माई फर्स्ट क्लास, जहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द परफ्यूम, और कोई और नहीं है, सिर्फ ये 3 जनी है. तो नेशनल इनकम निकालने का तरीका क्या था? एक तरीका था कि जो फाइनल गुड बन के आया है सिर्फ उसकी वैल्यू ले लो तो नेशनल इनकम हो गया. तो दैट इज प्रोडक्ट मेथड. दैट इज व्हेन आई एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, दैट्स नोन एज प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. अब दूसरा तरीका हो सकता है कि जितने लोग इकोनॉमी में थे वो लोग क्या अर्न कर रहे थे उसको ऐड कर दो तो भी इनकम आ जाएगी. ओनर ने क्या अर्न किया, लेबरर ने क्या अर्न किया, जिसने हमको लैंड दिया उसने क्या अर्न किया. इफ वी एड अप द इनकम ऑफ एवरीबॉडी वी विल गेट आउट विद द नेशनल इनकम. द थर्ड तरीका कुड बी किसने कितना खर्च किया, मतलब what did I pay to the, so it's actually the ulta, right? You talk about the income of somebody will be the expenditure of somebody. So either you take up the expenditure done by somebody, or you take up the income done by somebody, or you take up the final product being produced in the economy. You will ultimately reach up to the national income. So let's study each of these. We are first talking about the output method or the product method. Product method means it is, they say for this they are dividing the economy into different sectors like agricultural, mining, transport, commerce, communication and other services. They are being very clear that we are going to take up the value of all goods and services which are being produced in the economy. So for these purposes they are using 2 methods in order to avoid any double counting, because if you remember I told you we should not add up the value of intermediate good, क्योंकि अगर मैं intermediate good की value भी add करूंगी और final good की value भी add करूंगी तो double counting हो जाएगी, right? So I need to add up or consider only the value of the final good. ठीक है. So they use 2 approaches in order to avoid double counting. One is only taking up the value of all the final goods which are being produced either in the primary, secondary or tertiary sector, right? Primary, secondary or tertiary sector, whatever goods are being produced, they are taking them up. They are not taking the value of intermediate goods. Okay? So value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector included in the value of all intermediate goods transactions are ignored. बैठ गई बात दिमाग में. इन्होंने इसका एक हमको एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है. फॉर एग्जाम्पल दे से द प्राइस ऑफ अ ब्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ wheat, making of flour, etc. Now both these wheat and flour, they are intermediate goods. So either I take wheat, flour और फिर ब्रेड भी लूंगी तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना. सो आई विल टेक अप ओनली द वैल्यू ऑफ द ब्रेड. आई विल नॉट टेक अप व्हीट, फ्लावर एंड ब्रेड. सो सिंपल सा चीज है, दे आर ओनली टेकिंग अप द वैल्यू ऑफ
final goods and services which are being produced in the primary or secondary or the tertiary section. Then second method could be, instead of going by the product method, they can just keep on adding up the value which is being added at every stage. That is output और पिछला input, मतलब output और input के जो बीच का difference होता है उसको हम बोलते हैं value. कितना value add किया? अगर मेरे पास 100 रुपए का input था और output 150 का निकला है तो what is the value added? 50 rupees का value add हुआ है. So if you keep on adding the value at each stage, you will be able to get the, and you total all that, you will be able to get the national income which is being produced in the country. So if they have given you an example, for example, they are making a shirt. So they took up cotton. Cotton is the first raw material. There is no input as such. So the value added is 150. Then from this cotton, they made yarn, right? So the value of yarn is 250. Now what was the input? I had input this cotton and from there we made yarn. So what is the value added? 250 minus 150, which is 100, right? From this yarn, I made the final good, that is a shirt or a t-shirt or whatever. The value of the shirt is 500, right? Now this, from this yarn, they made cloth, right? So the value of the cloth is 400. So this cloth is made out of yarn. So what is the value added? Yarn se cloth aane mein 250 minus 400, which is 150. Am I clear? And then as cloth se they made a shirt, which is of 500. So cloth or yarn shirt की वैल्यू में कितने का फर्क है? 100 का. So what is the value added? 100. या आप इसको बोल सकते थे कि फाइनल गुड की वैल्यू जो है शर्ट की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ इनकम. That's one way, directly finding out the value. Or at every step you are adding up the values. The कितना value addition हो रहा है, you add up all the value addition and you get the value of the total value of income which is being produced in the country. ये समझ में आया कि नहीं आया? They took up cotton, cotton से yarn बनाया, yarn से cloth बनाया, cloth से shirt बनाया. So cotton की value 150, input कुछ भी नहीं था, value addition is 150. यहाँ से इन्होंने yarn बनाया, yarn की value 250 थी, उसका input कितना था? 150 का. तो इन दोनों के बीच का जो difference हो गया वो है 100. This is the value added. फिर इस yarn से उन्होंने cloth बनाया, cloth की value 400 है, yarn की value 250 थी. कितने का value addition हुआ? 150 का. And then इस cloth से उन्होंने shirt बनाई. तो शर्ट के लिए इनपुट क्या था? क्लॉथ था. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 100. सो यू कीप ऑन एडिंग द वैल्यू विच इज बीइंग एडेड एट एवरी स्टेप. यू विल बी एबल टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ या फाइनल अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम अर्न्ड. Now they have tried to give us certain things that when we are doing all this, we need to take certain measures in order to avoid double counting. First precaution they have said is that only the value of final goods and services must be taken. So we should be very clear, no value of raw material and intermediate goods you are taking, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो double counting हो जाएगी. Then they are very clear that जो गुड्स बिकते नहीं है, जैसे फार्मर है, उसने गुड बनाया, उसने सब्जी उगाई, अब वो सब्जी खुद उसने सेल्फ कंज्यूम कर ली. अब ये जो सेल्फ कंज्यूम हुई है वो गुड प्रोड्यूस तो हुआ है ना हमारी कंट्री में, किसी ना किसी ने तो कंज्यूम किया है, भले उसका पैसा नहीं दिया हो, लेकिन ये है तो हमारी इनकम ना. सो यू शुड ऐड दिस वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड प्रोडक्ट, राइट. सो द ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी बाय गेस वर्क, राइट, कि इतना प्रोड्यूस करते होंगे तो इतना सेल्फ कंज्यूम करते होंगे. सो दिस assumed value or imputed value of the goods and services which were there for self consumption, इनको we must include in the national income. समझ में आ गया? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेंगे, सेल्फ कंजम्पशन वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू ऐड करेंगे. दैट विल बी ऑन अजम्पशन बेसिस. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स. देखो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती है ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री. अब ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है, फिर इस गवर्नमेंट इसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट ना. ये इनडायरेक्ट टैक्स की कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड होती है गुड की वैल्यू में. अगर मैं इसको एक्सक्लूड नहीं करूंगी देन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट,
उसके अंदर तो ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है और उसको एक्सपेंड कर रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा, राइट? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो गाइस, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है वो डिडक्ट करने हैं। लॉजिक समझ में आ गया क्यों डिडक्ट करने हैं? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस नीड्स टू बी डिडक्टेड। और जो सब इसी का उल्टा क्या, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो गवर्नमेंट अपने पास से खर्च कर रही है, तो उससे मार्केट वैल्यू कम हुई है। बट दैट इज एक्चुअली, if I want to really find out the value of the goods and services, I should add up the value of the subsidy. So subsidy is given by the government should be added to get the correct information. तो अभी तक 3 चीजें हमको समझ में आ गई। इनडायरेक्ट टैक्स हमको माइनस करना है, सब्सिडी हमको ऐड करनी, क्यों करनी है उसका लॉजिक बता दिया मैंने। सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी आइटम होता है जो फार्मर्स वगैरह हमारे कंज्यूम कर लेते हैं, वो ऑन imputed basis we add them up. We take up only the value of final goods and services. Then of course we need to take into consideration the changes in the price level if you want to be exact. And then कोई भी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू हमको ऐड करनी है और इंपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू हमको डिडक्ट करनी है। डेप्रिसिएशन हमको डिडक्ट करना है। कोई भी सेकेंड हैंड, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू हमको नहीं लेनी है बिकॉज they were not produced this year. So sale and purchase of second hand goods should be ignored as it is not a part of the current production. So the current national income cannot have the value of sale and purchase of second hand goods. So guys, with this, I hope all of us are very clear with the product method. So product method के लिए final good method है या value added method है, दोनों method समझ गए, तकलीफें समझ गए। तकलीफ क्या कि इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग हमको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू लें, हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें, सब्सिडी ऐड करें, हम डेप्रिसिएशन माइनस करें, हम एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड करें, इंपोर्ट की वैल्यू माइनस करें, हम सिर्फ इनकम ऑफ द करंट ईयर कंसिडर करें, इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हम ना लें। एंड देन जो चीज़ सेल्फ कंज्यूम हो गई उसको ऑन इम्प्यूटेड बेसिस हम उसको ज़रूर से कंसिडर करें बिकॉज दैट इज ऑल्सो जनरेटेड इन दिस ईयर। So this was your output method or the product method. Then now let's look at the income method. Income method में जैसे मैंने आपसे बताया था कि instead of adding up the value of final goods and services produced in the economy, I can just add up all the income earned by all people in the economy. जितने factor of production है, rent, wages, interest, profit. ओनर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, जो हमको कैपिटल देता है उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, जिससे हम जगह किराए पे लेते हैं उसको रेंट चाहिए, जो हमारे लिए काम करता है उसको क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। सो इफ वी एड अप ऑल द revenue earned by all the factors of production, we will be able to understand the total national income earned in the economy. So GNP is treated as a sum of incomes earned as a result of undertaking economic activity on the part of resource owners and reflected in the production of the total output of the goods and services during any given time. Guys, इतना मुझे याद करना पड़े तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो आपके लिए भी all the income earned by all the factors of production, the sum total of all is gross national income. So याद करने के लिए रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मिक्स्ड इनकम, राइट, देन इनकम फ्रॉम अब्रॉड. So just national income, your Y, your net income is consisting of the rent, the wages, the interest, the profit, the mixed income and the net income from abroad. Now here when we are doing this, we need to remember certain things. ये exam point of view से बहुत important है, reasoning assertion में भी important है, that when we are doing the calculation of national income on the basis of income method, we should be very clear. We should not take up any kind of transfer income or transfer payments. Because जैसे टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, अभी डायरेक्ट टैक्स मेरी इनकम पे लगा. Now मैंने अगर 100 रुपए की इनकम कमाई, उसमें से मैंने 30 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया, तो बेसिकली कोई कुछ नया जनरेट नहीं हुआ, मैंने अपनी इनकम को शेयर कर लिया. वही 100 रुपए की इनकम थी, वो 100 रुपए में से 70 रुपए मेरे पास है, 30 रुपीज गवर्नमेंट के पास है. 100 प्लस 30 नहीं हुआ ना. तो अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम इंक्लूड कर लूंगी
तो गाइज इनकम गलत कैलकुलेट हो जाएगी ना. सिंपल लॉजिक. एनीथिंग विच इज एन एप्रोप्रिएशन इज नॉट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना. It does not mean any new income has come into existence. So on that ground, any kind of donations, gifts, scholarship, unemployment allowances, they need to be ignored when you're doing your national income calculation. Logic समझ गए आप? Transfer payments and transfer incomes are not generation of income. कुछ नया प्रोडक्ट होके उसको सेल परचेज नहीं किया है आपने, ठीक है? So transfer payments or transfer income needs to be ignored. Any kind of unpaid service, like I'm taking care of my own child, I'm teaching my own child, and I'm not being paid anything for it, right? Now these are, nothing is being, do not confuse it with self-consumption, right? I produce a thing and I self-consume it, that is definitely good was produced and consumed, right? Though monetary revenue transfer nahi hua, but that is income. But any kind of unpaid services like a teacher teaching his or her child or a housewife, these should not be taken up as the part of income. Second hand goods की income हमें नहीं लेनी है, ठीक है? उसका logic मैं बता चुकी हूँ. Shares and bonds की sale होती है, then these are not real national income, ठीक है? These are not happening because of the goods and services being produced and consumed in the economy. तो अभी तक क्या बैठ गया? सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज सेल नहीं होना है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स का परचेज एंड सेल का इनकम नहीं ऐड होना है, अनपेड सर्विसेज की इनकम ऐड नहीं होनी है, किसी तरीके का ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होना है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द दैट इज इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस जैसे वाटर सप्लाई, ये जरूर से इंक्लूड होने चाहिए. क्यों? क्योंकि this is income. So this is undistributed profits of company, income from government property and profits from public enterprises, right? This is income, so they need to be included. Revenue received by the government through direct taxes, मैंने अभी आपको लॉजिक बता दिया, that's appropriation of income. Tax जो है is nothing but sharing of your earned income with the government. That's also not to be included. So अभी तक हमको क्या क्या चीजें समझ में आ गई? Sale of shares and bonds should be ignored. That's not real income. Reasoning and assertion में reason आएगा तो assertion because that's not real income. क्यों नहीं लेना चाहिए? Because ये real income नहीं है. Sale of second hand goods like car या house नहीं लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि these are not produced in the current year. ये assertion reasoning हो गई. Unpaid services like services of a housewife or teacher because there is no revenue generation out of it, so these need not be included. Any kind of transfer payments or transfer income should not be included. But any kind of imputed production kept for self-consumption, they should be included. जैसे मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी में क्लासेस ले रही हूँ. अब मैं खुद को रेंट नहीं दे रही हूँ, बट मैं किसी और से लेती तो रेंट देती ना. So imputed value of production kept for self-consumption and imputed, like imputed rent of owner-occupied houses should be included, right? So, imputed value of anything which is being produced for self-consumption is a part of the national income. Any kind of undistributed profits of a company, income from government, property and profits from public enterprises like water supply, they are income, they should be included. Any kind of direct tax collection should not be included because that's just a transfer payment. Coming up to the last part. So अभी इनकम मेथड समझ में आ गया. इनकम मेथड मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो कुछ भी अर्न करते हैं उसको अपने ऐड कर लिया तो हमारे को कितनी इनकम कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है पता चल जाती है. ओनर को क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है. हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट होता है. जब वर्कर काम करता है उसको वेजेस मिलती है. हम प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो रेंटल इनकम होती है. तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, wages, then mixed income plus income from abroad, that is X minus M. This is all your net income method for the purpose of calculating your national income. Rent, wages, interest, profits, mixed income plus the income from abroad. What are the precautions? Second hand sale purchase mat lo, sale of goods and services mat lo,
तुम्हारा ट्रांसफर पेमेंट्स मत लो, डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है वो मत लो, बट इम्प्यूटेड जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है फॉर सेल्फ कंजम्पशन उसको लो, एनी काइंड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है या एनी काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट रिसोर्स है उसको डेफिनेटली लो. सो आई होप अभी तक हमको याद हो चुका, मैंने बारी बारी रिपीट कर दिया है. Now last but not the least is that we take up that instead of taking up the income, we just take up the national income by all the expenditure which is incurred by the society in a particular year. The total expenditure done by the society in a particular year, if we add that up, we get out with the national income. So expenditure done by the people will be consumption, by the investors, by the government, from abroad, and net of our receipts and payments. So technically we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure made by all the firms as well as the government of a country during the year. We will be able to get the national income of the country. Now guys, let's look at it. Private final consumption means the goods which we are being used inside the household. For example, by household on non-durable goods, जैसे food which are being used immediately, expenditure on durable goods as television, washing machine, any kind of services or anything which is being used by the household for for their own consumption, durable or non-durable, that's known as private final consumption. ठीक है? So gross domestic private investment would be, it refers to expenditure done by the private businesses, whether it is for a new work or it is for renewal. Then similarly, government ka final consumption and government ka investment expenditure. So any expenditure which the government does for the consumption, like on administrative services, law and order को maintain करने के लिए, education को maintain करने के लिए, defense को करने के लिए, या any kind of investment activity done by the government, like building of roads, railways, bridges, canals. So technically investment and consumption done by the individual, firms and the government, plus income from foreign investments and the net receipts is going to give us the total income earned by the country. तो हम इनकम साइड की जगह हम क्या देख रहे हैं, खर्चा साइड देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर साइड. तो जब हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं, लुक एट इट, वी टॉक अबाउट, जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो वी टॉक अबाउट प्राइवेट कंजम्पशन, दैट इज अ एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड. सिर्फ एग्जाम में ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड ऑन इमीडिएट कंजम्पशन के लिए गुड्स या फॉर ड्यूरेबल गुड्स या एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डन फॉर new work or for renewal, expenditure. Similarly, any kind of expenditure done by the government for consumption, like for maintaining defense or law and order, and any kind of investment done, that is in the form of building infrastructure, roads, canals, expenditure word का use करना है. So expenditure done by the government, expenditure done by the individuals, plus the difference between the exports and imports of the country, the difference between the expenditure incurred by the foreigners on domestic goods and services, which will be the receipt, and the expenditure incurred abroad by the residents on foreign goods and services would be the payments. So total of these expenditures is going to give you the net income earned in the country, and this is known as expenditure method या total outlay method. या आप बोल सकते हो सारा खर्चा जो सोसाइटी ने किया है उसको आप ऐड कर दो तो आपको टोटल नेशनल इनकम मिल जाती है.
जैसे कि हर मेथड में कोई तकलीफें हैं, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. सिमिलरली इन एक्सपेंडिचर मेथड वी ऑल्सो नीड टू कीप सर्टन प्रिकॉशंस. वन ऑफ द प्रिकॉशन इज प्लीज इग्नोर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर डन ऑन द इंटरमीडिएट गुड बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगी. Please ignore any kind of expenditure done on the repurchase of second-hand goods because these are not produced currently. Please ignore any kind of expenditure on transfer of payments like age-old pensions, unemployment allowances. ये ignore क्योंकि इनकम तो अर्न हो चुकी है ना, इनकम अर्न हो चुकी है, उसमें से आप एक पैसा उठा के एक पेंशन फंड में डाल रहे हो तो वो नई इनकम थोड़ी हुई, राइट? सो वी नीड टू रिमेंबर आपने खर्चा किया है फॉर एनी ट्रांसफर पेमेंट, आपने एक्सपेंडिचर किया है फॉर एनी बाइंग ऑफ योर सेकेंड हैंड मशीनरी या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, उसको इग्नोर करना है. एक्सपेंडिचर ऑन रीपरचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, ये सब कुछ हमने इनकम मेथड में भी पढ़ा था. सेम चीज है, सिर्फ वहां इनकम थी, यहाँ एक्सपेंडिचर वर्ड है. सो एनी एक्सपेंडिचर विच यू डू फॉर बाइंग दी शेयर्स, बॉन्ड्स, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड. इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करना है, सब्सिडीज को इंक्लूड करना है, इसका भी लॉजिक हम पढ़ चुके हैं. सो इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्लूड सब्सिडीज. Please take up any kind of expenditure only on the final goods and services. Do not take up anything which you have done on second-hand buying of second-hand bonds, second-hand goods or services. Do not take up any kind of transfer payments. Do not take up any kind of expenditure which you are doing on intermediate goods. Just remember those. Then you will be able to reach up. These are certain precautions. If you will keep this into mind, you will be able to get the total income being produced in the economy by using the expenditure method. Now guys, this part, difficulties in measurement of national income. This comes as a 4 marker. अभी तक I think आप सभी जन समझ चुके होंगे, थोड़ा सा repetition लग रहा होगा. जैसे मैंने बोला इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड एक दूसरे के मतलब इनकम मेथड में आई नीड टू टॉक अबाउट द इनकम अर्न, एक्सपेंडिचर में आई नीड टू टॉक अबाउट द सेम थिंग कि एक्सपेंस अर्न, एक्सपेंस डन, सारी वही चीजें हैं. अभी तक दिमाग में बैठ चुका होगा कि भाई प्लीज डू नॉट कंसिडर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स. जब हम सेल की बात करेंगे तो हम इनकम मेथड है, परचेज ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड है. बट वॉट एवर सेड एंड डन, I am not supposed to consider any kind of revenue generated by the sale purchase of the shares. I am not supposed to consider anything by the revenue generated or income earned from the sale of the second hand. जब income method होगा तो sale होगा, expenditure method होगा तो from purchase of second hand. आपको सिर्फ अपनी wordings का ध्यान रखना एग्जाम में, सारा वही चीज है. ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट अ पार्ट, सेम चीज. एक्सपेंस मेथड, इनकम मेथड, लॉजिक इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों माइनस करने हैं, सब्सिडी क्यों ऐड करनी है, रेपिटेटिव चीजें हैं. तो अगर एक बार समझ ली तो फिर गलती नहीं होगी. अब आती बात कुछ थियोरेटिकल डिफिकल्टीज जब हम व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. पहली डिफिकल्टी उन्होंने बताई है ट्रांसफर पेमेंट्स की. ट्रांसफर पेमेंट्स आप समझ गए. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को एक सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए की. उस 1 लाख रुपए की सैलरी में लेट्स से 10,000 रुपए इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू माय प्रोविडेंट फंड अकाउंट. ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है, ये मैं जब रिटायर करूंगी तो दैट मनी आई विल हैव दैट सेविंग विद मी. ठीक है. तो दे आर सेइंग इंडिविजुअल्स गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, but whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. On one hand, they are a part of individual income, and on the other hand, they are a part of government expenditure. Hence, these transfer payments are not included in the national income. अब इन्होंने जो इंग्लिश में बात करी है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं. मैंने जो पैसा कमाया, उस पैसे में से जो पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया पेंशन फंड में, अब मेरी पूरी इनकम 1 लाख की कंसिडर हो रही है. अब मैं 1 लाख की अपनी इनकम भी कंसिडर करूं और फिर वो जो 30,000 रुपीज मैंने फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया तो गवर्नमेंट की इनकम भी कंसिडर करूं, तो जैसे मैंने आपसे बोला था डबल काउंटिंग हो जाएगी ना. सो आई कांट हैव बोथ. सो ऑन दैट नोट दे आर वेरी क्लियर कि ऑन वन हैंड इट्स एन इंडिविजुअल इनकम एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज अ पार्ट ऑफ
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट वो जो पैसा अर्न करेगी उसी से they are going to spend it for the purposes, right, जो उनका काम है. So we can't have both the things. We need to have only one. So that is why they are saying transfer payments are not included in the national income. Next, gambling, black marketing, these are all illegal income. They are not included in the national income. But income तो generate हुई है, but illegal है, accounting नहीं है, तो obviously they are not included in the national income. But आपको क्या लगता है? Income तो generate हुई है ना, but it's not included. Then unpaid services, हम लोग हमेशा बात करते हैं the work done by a mother, if you would have somebody else would have done it, it would be costing so and so. But बहुत clearly लिखा है unpaid services should not be a part of the national income. But आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? But these are difficulties, so they are very clear. For the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. But there are various unpaid services जो हम नहीं include करते. Then self consumption, जो self consumption के लिए goods and services हमने बारी बारी बात करी है, that on imputed basis we'll add it up. Now this is something very questionable. Products kept for self consumption and other do not enter the market. Hence it is not accounted for in the national income. But हर जगह वो आपसे क्या बोल रहे हैं, हर जगह आपसे क्या बोल रहे हैं कि वो अकाउंट होता नहीं है. But what are they trying to tell you? Look at it. Goods used for self-consumption by farmers should be estimated by guesswork. An imputed value of goods purchased for self-consumption is included in the national income. But this is guesswork, no. You need to calculate that, okay, this much he must have kept aside for his self-consumption. Now, this is a matter of difficulty. It's a matter of difficulty. जैसे illegal income, कैसे पता चले कितनी illegal है? It is a matter of difficulty because this is not included in the national income. Similarly, unpaid services तो कहते include ही नहीं करना है. Then self-consumption वाली कुछ technically उसकी accounting नहीं होती, तो how do you record it? Then income of foreign firms. Income of a foreign firm should be included in the national income of a country where the firm actually undertakes the production work. हम actually जो production work का काम यहाँ से ले रहे हैं उसकी income include होनी चाहिए. Yes or no? But these are all problematic areas. Then गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज देता है, हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमको जो रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, it is very difficult to find out the market price of these services which the government is doing. We do not know the real value of these services. So technically ये हिस्सा भी properly national income में include नहीं होगा. तो कैन यू अंडरस्टैंड, अगर एक बार आप लॉजिक समझ लो नेशनल इनकम का, आप कोई भी चीज का जवाब दे सकते हो. क्या डिफिकल्टी लग रही है? डिफिकल्टी आपको क्या लग रही है? अनपेड सर्विसेज जो हैं उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि उनकी अकाउंटिंग नहीं होती. जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज है हमको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, बट उसकी अकाउंटिंग नहीं होती. गवर्नमेंट जो हमको सर्विसेज देता है उनकी रियल वैल्यू हमारे लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है. ट्रांसफर पेमेंट्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि एक तरफ वो इनकम है, एक तरफ वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. फिर हमने बात करी कि जो फॉरेन फर्म्स हैं जो यहाँ पर एटलीस्ट प्रोडक्शन वर्क ले रहे हैं उनकी हम इनकम नहीं कंसिडर कर रहे हैं. एंड देन यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंजिंग प्राइस लेवल. तो गाइस याद करना है तो हमने कुछ चीजें तो हमारे दिमाग में बैठी गई हैं. ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स मेजर कर पाना, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. So question है whether they should be included or not included. We are very clear, नहीं include होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए उसका लॉजिक बहुत क्लियर है, but this is a problem. Unpaid services, illegal income, self consumption, foreign firms. याद हो गई 5 चीजें. फॉरेन फर्म जो इनकम कमाता है, स्पेशली जो प्रोडक्शन वर्क क्या लेता है, उसकी इनकम इंक्लूड होनी चाहिए. याद हो गया अभी तक? इलीगल फर्म, इलीगल इनकम है, वो इंक्लूड होना चाहिए बट होता नहीं है. अनपेड सर्विसेज अकाउंटिंग नहीं होती तो इंक्लूड होता नहीं है. सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम लोग सेट असाइड करते हैं उसकी अकाउंटिंग नहीं होती, हालांकि वी शुड इंक्लूड इट इन द इनकम बट इट्स नॉट अकाउंटेड फॉर. ट्रांसफर पेमेंट्स we do not include it in the national income. Then guys, the services which the government does, very difficult to find out their real market value. Hence actually उनका the real value is not included in the national income. And last but not the least,
the changing price levels, right? So inflation ho gaya. So this is what they're trying to say, that national income calculation can be difficult where if there's a change in the price level. For example, if the price level rises, the national income may show an increase even though production to decrease hua hai. Are you understanding? Inflation की वजह से value ज़्यादा दिख रही है, but production उतना नहीं है. So all these can be these are difficulties. So these were theoretical difficulties. These were theoretical difficulties, right? Illegal income की, या unpaid services की, या foreign firm की, या self consumption की, या transfer payment की, या government services की, या price levels की. Practical difficulties हैं, बहुत बड़ी practical difficulty. Problem of double counting. Flour used by the bakery is an intermediate product and that by a household is a final product. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले example दिया था कि जब हमारा फर्स्ट क्लास हुआ था, मैंने बोला था हम परफ्यूम बना रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, वो जो लिक्विड है हो सकता है वो किसी और जगह वो एज इट इज भी इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए उसका नाम इंटरमीडिएट गुड है. ठीक है? सो इट मे बी अ फाइनल गुड फॉर समबडी एल्स. नाउ this can be a problem with respect to identifying that double counting avoid करने के लिए हमसे बारी बारी कहा गया that we are only supposed to take up the value of the final goods and services. But practically we may suffer that sometimes it is very difficult to differentiate between the final good and the intermediate good. इसीलिए I told you that intermediate good is a good which is used for the purpose of final production, but it can be removed if it is removed from the process. It can be used as it is also, right? So it may become a final product, final good for in some other manner, right? So ये एक problem है. Then inadequate and unreliable data, ये तो I think is a problem across. It's a practical problem. Then guys, your depreciation. Depreciation refers to wear and tear of the assets. There is no uniform accepted or standard rates of depreciation used for all the capital assets. So it is difficult to make the correct deductions. Then capital gains and losses which accrue to the property owners due to increase and decrease in their market value of their capital asset. They are not included in the national income because they do not result because of the current economic activity which is undertaken, right? So we do not consider the capital gains and losses, right? Ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account for their production, तो वो लोग information ही नहीं देते, तो accounting ही नहीं होती. Then difficulty in classification of the working population. For instance, farmers in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously, in the off season, they are engaging in some other occupation. In such a case, very difficult to identify what is their real source of income. Then valuation of inventories like intermediate goods, semi-finished goods. Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production. Therefore, the valuation of inventories requires a very good assessment. So, I hope by now we are very clear that what are the theoretical difficulties and what are the practical difficulties. Practical difficulties is raw material, intermediate and semi-finished product in the stocks are the inventories. Unka valuation may not happen properly. Our working population, they may be doing agriculture for one part of the year, second part of the year, they may be doing some other part work. So we do not know how to calculate their income. So one is inventory, the other is classification of our working class. Third is illiteracy and ignorance. Some people do not keep accounts, right? Capital gains and losses, there's an increase and decrease in the value of the assets, but that is not being recorded because that is not happening because of the economic activity. चार चीजें याद हो गई. Capital gains and losses not recorded because they are not included in the national income because the changes do not result from the economic activities. Illiteracy. Third is to classify the working class, what work they are doing. Next, was the valuation of inventory. चार चीजें याद हो गई. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डिफिकल्ट है, अगर वो गड़बड़ हो गया तो हमारा इनकम का कैलकुलेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगा. हमारी वर्किंग क्लास को आइडेंटिफाई करना
ignorance and illiteracy, people do not maintain accounts, and last but not the least, capital gains and losses. कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, so I do not know what is to be subtracted in the name of depreciation. Next, guys. Now, guys, let's talk about the practical difficulties, right? Practical difficulties, guys, एक तो difficulty है कि there is double counting. Double counting में हमने बात कर दिया कि एक ही चीज इंटरमीडिएट गुड किसी के लिए फाइल गुड हो सकता है, तो हाउ डू वी अगर it is being counted twice, one as an intermediate good, one as a final good, where it is actually an intermediate good. So this is what they're trying to say: flour used by a bakery is an intermediate good, right? But flour used by the household is a final product. So it becomes difficult, right? This is a practical difficulty. How do you identify it's an intermediate good or it's a final good? Okay? So double counting हो सकती है. There is a segment जिसमें transactions are actually not happening in monetary terms. Transactions are happening, but they're not monetized. For example, agriculture still being in the stage wherein, just a second, being stage wherein you are exchanging goods for barter system चल रहा है, simple सा. So part of the production is partly exchanged for some other goods and services, right? So there is an existence of a non-monetized sector. Can I say, I'm just writing an N here, right? बाद में लिमोनिक बनाने में काम आएगा. So practical difficulty एक हो गई double counting. There's a D, then there is monetized sector, then there is unreliable data. DMU, right? D was for double counting, M was for a sector which is still not monetized, so demonetized, non-monetized data के लिए. So instead of an M, I can use an N. Right? So double counting, non-monetized data, then inadequate and unregulated data. Then guys, depreciation. Depreciation, the wear and tear of assets. There's no standardized depreciation rate, a uniform rate which is applicable on all capital assets. So this is a practical difficulty. So depreciation. So guys, अभी तक दो D आ चुके हैं. One was for double counting, one was for depreciation. एक N था which was for non-monetized, and एक था U which was unreliable data. Next is guys, capital gains and losses which is happening to the owners because of increase and decrease of the value of their assets is not included in the income, because these changes are not a result of the current economic activities. So you're not taking this, but yes, there is a gain or loss, but these are not being included. So C for it. So दो D हो चुके हैं, एक N है, एक U है, एक C है. Then guys, illiteracy. अभी भी छोटे traders, they are not maintaining any accounts. So this is ignorance or illiteracy, what do you say? Then very difficult to classify our working class. Sometimes some part of the year they are actually farming, some part of the year they may be doing some other work. So how do you classify your working class? And last but not the least, the value of inventory, the raw material, the intermediary good. If anything goes wrong with the valuation of the inventory, there's going to be a problem with respect to the valuation of income. So practical difficulties में अभी तक हमने देखा दो बार D आया, याद करने के लिए double counting and depreciation. Depreciation का कोई standardized rate नहीं है on all capital goods, so difficult for computing. Double counting हमको पता चल गया. Some goods may be used as an intermediate good, maybe an intermediate good for somebody, but maybe a final good for somebody else. तो दो बातें याद हो गई. Next is non-monetized sector. यहाँ हमने बात किया agriculture में अभी भी some part of it's only barter system is what they follow. Fourth, unreliable data, which is a task, right? We are not able to get the right information. So दो D हो गए, N हो गया guys, U हो गया. दो D, N, U.
Then there are two I's. One I is for inventory. अगर wrong calculation of inventory हो गया तो national income का computation गलत हो जाएगा. And then one was for illiteracy or you can say ignorance. So दो I, दो D हैं, दो I हैं. एक I inventory के लिए और एक I आपका ignorance or illiteracy. Still people are not maintaining accounts. एक आपका U हो गया for unregulated market, एक N हो गया आपका non-monetized. Okay. And then guys, difficulty in your working class. They work for some time, they work for in some other work. And last but not the least, capital gain and losses का recording नहीं होगा. So to remember, दो D हैं, दो I हैं. There is an N, there is a U, there is a C, and there is a W. So N, C, U, W, दो D and दो I. So these are the 8 practical difficulties which we are facing. I hope you understood. And now we come to the end of the class, which talks about the importance of national income. Guys, national income is actually, it measures how well we are doing, as a country. So it helps you to determine your national policies. It helps you to understand what is the standard of living of our people. We can compare it with different countries and see how we are doing. We can actually understand that how national income is distributed, what are the disparities which are there. एक segment of the country ज़्यादा कमा रहा होगा, एक segment नहीं कमा रहा होगा. We can actually plan our policies properly with the help of national income computation. Now with this, guys, we come to an end of our session on national income. Please do wait for my next class, wherein we will be only solving some sums, right? So guys, if you've really understood and enjoyed listening to me and you've actually learned something, then do share my lecture with your friends. And if you have liked it, do put in a thumbs up. And if you want me to teach you something more, then please do comment. And if you're still not subscribed to my YouTube channel, then please do. All the best, guys. See you in my next class. Have a great day.